नमस्ते बच्चों, मैं साधना राव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विश्वासः नैव कर्तव्य, दैट मीन्स नेवर ट्रस्ट, जो कि एक कहानी स्वरूप में दिया गया है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए। कक्षा 7, विषय संस्कृत, पाठ 7, विश्वासः नैव कर्तव्यः, दैट मीन्स नेवर ट्रस्ट, सेशन 1। संस्कृत साहित्य में व्यवहार और नीति का उपदेश देती बहुत सी प्राणी कथाएं हैं। इस पाठ में अजा और अजाशिशु इन पात्रों के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, कहानी समझने से पहले दिए गए शब्दों के अर्थ जान लें। वर्ड मीनिंग्स: अजा गोट, स्वस्य ओन, बहिः outside, शीघ्रं quickly, तिष्ठतु stand up, अतः so, शृगालः fox, गमनीयं should go, नेष्यामि shall carry, भवान् कः who are you, वञ्चकः cunning, पीपल वृक्षः people tree, अन्विष्यति is searching, दृष्ट्वा after seeing, श्रुत्वा on listening, क्रुध्यति is angry, प्रहरति is blowing। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए दिए गए चित्र 1 के पैराग्राफ पर। एकम वनम अस्ति, एकम यानी वन, वनम फॉरेस्ट, अस्ति यानी इज, देयर इज अ फॉरेस्ट। वने एका अजा अस्ति, वने मीन्स इन द फॉरेस्ट, एका अजा वन गोट, अस्ति यानी is, there is a goat in the forest। सा स्वस्य पुत्रं वदति, सा means she, स्वस्य यानी own, पुत्रम to the son, वदति says, she tells her young one, पुत्र अहम बहि गच्छामि, पुत्र यानी सन, अहम यानी आई, बहि आउटसाइड, गच्छामि यानी गो। सन, आई एम गोइंग आउटसाइड। अहम शीघ्रम आगच्छामि, अहम यानी आई, शीघ्रम यानी क्विकली और soon, आगच्छामि means come, I will come soon। अत्र तव तिष्ठतु, अत्र यानी here, तव only, तिष्ठतु
stay. You stay here. Translation: There is a forest. There is a goat in the forest. She tells her young one, Son, I am going outside. I will come soon. You stay here. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अजा वनम गच्छति. अजा यानी गोट, वनम यानी फॉरेस्ट, गच्छति यानी गो. The goat goes to the forest. शिशु अपि अनुसरण करोति. शिशु यानी young one. अपि means also. अनुसरणम फॉलो करना यानी कि अनुसरण करना. The young one also follows her. शिशुः मार्गं विस्मरति. शिशु means young one. मार्गम यानी रास्ता, वे. विस्मरति भूल जाना, forgets. The young one forgets the way. अतः सः रोदिति. अतः means so. सः means it. रोदिति means cries. So it cries. शृगालः शिशुं पश्यति. शृगालः means fox. शिशुं young one. पश्यति see. A fox sees the young one. सः सुकोमलं मांसं खादितुम् इच्छति. सः means it. सुकोमलम soft. मांस यानी मीट. खादितुम् इच्छति wants to eat. He wants to eat its soft meat. Translation: The goat goes to the forest. The young one also follows her. The young one forgets the way, so it cries. A fox sees the young one. He wants to eat its soft meat. तो चलिए बच्चों, अब ध्यान दीजिए आगे की चित्र पर. शृगालः वदति भवान् कः. शृगाल means fox. वदति says. भवान् you. कः means who. The fox says, who are you? किमर्थं रोदिति. किमर्थं means why. रोदिति crying. Why are you crying? समस्यां ज्ञात्वा अति करुणतया सः वदति चिन्ता मास्तु. समस्या ज्ञात्वा means knowing the problem. अति करुणतया with great compassion. बहुत ही करुणता से. सः वदति वह बोला. He says. चिंता मास्तु don't worry. Knowing the problem, he says with great compassion, don't worry. अहं मातुः समीपं नेष्यामि.
Aham means I. Matu to mother. Samipam near. Neshyami will take. I will take you to your mother. Maya sah chalatu. Maya means me. Sah means with. Chalatu means come. Come with me. Sa mama परिचिता अस्ति. सा यानी she. मम यानी my. परिचिता अस्ति. परिचिता means known. अस्ति is. She is known to me. Translation: The fox says, Who are you? Why are you crying? Knowing the problem, he says with great compassion, Don't worry, I will take you to your mother. Come with me. She is known to me. यहाँ सेशन 1 पूर्ण। पर बच्चों, कहानी अभी बाकी है। आगे की कहानी हम सेशन 2 में जानेंगे। तब तक आपको दिए गए शब्दार्थ और भावार्थ का वाचन करके अपनी क्लास वर्क में लिखना है। इसे आप अपना गृह कार्य समझें। स्वस्थ रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।